Welcome to a world where data meets creativity. Whether you're just starting out, a student looking to deepen your knowledge, or a seasoned professional aiming to refine your skills, this channel has something for you. Immerse yourself in expert Excel and Power BI insights, where you'll master advanced data visualization techniques and learn to automate tasks for greater efficiency. Dive into cutting-edge AI discussions, staying ahead of the curve with the latest trends and innovations in data analytics and business intelligence. And if you're looking to build a thriving YouTube channel, we've got you covered with strategies and tips to help you grow and succeed. Join us on this journey to elevate your skills, boost your productivity, and unlock your full potential. Don't just watch, subscribe, engage, and become a part of our growing community. Together, let's transform the way you work with data and take your YouTube channel to new heights. Your success story starts here. So hit that subscribe button and let's get started. Welcome to a world where data meets creativity. Whether you're just starting out, a student looking to deepen your knowledge, or a seasoned professional aiming to refine your skills, this channel has something for you. Immerse yourself in expert Excel and Power BI insights, where you'll master advanced data visualization techniques and learn to automate tasks for greater efficiency. Dive into cutting-edge AI discussions, staying ahead of the curve with the latest trends and innovations in data analytics and business intelligence. And if you're looking to build a thriving YouTube channel, we've got you covered with strategies and tips to help you grow and succeed. Join us on this journey to elevate your skills, boost your productivity, and unlock your full potential. Don't just watch, subscribe, engage, and become a part of our growing community. Together, let's transform the way you work with data and take your YouTube channel to new heights. Your success story starts here. So hit that subscribe button and let's get started. This channel has something for you. Welcome to a world where data meets creativity. Whether you're just starting out, a student looking to deepen your knowledge, or a seasoned professional aiming to refine your skills, this channel has something for you. Immerse yourself in expert Excel and Power BI insights, where you'll master advanced data visualization techniques and learn to automate tasks for greater efficiency. Dive into cutting-edge AI discussions, staying ahead of the curve with the latest trends and innovations in data analytics and business intelligence. And if you're looking to build a thriving YouTube channel, we've got you covered with strategies and tips to help you grow and succeed. Join us on this journey to elevate your skills, boost your productivity, and unlock your full potential. Don't just watch, subscribe, engage, and become a part of our growing community. Together, let's transform the way you work with data and take your YouTube channel to new heights. Your success story starts here. So hit that subscribe button and let's get started. Hey, welcome everybody to my live today. Uh, Let me get this screen off from here.
As you can see today, we will be exploring a new AI model that has been in the market, which is DeepSeek. Before I proceed, I hope you are all having a good day, you had a good day, you are enjoying. Uh, Stay on my life today. We will be going down to the deep of what is DeepSeek, how it is different from the ChatGPT. We try to understand what is ChatGPT, how does the ChatGPT was in the market for quite a long time, and how the US market basically after the launch of DeepSeek model or DeepSeek technology that was launched. It was launched quite a few days back, but it now became public, and a lot of people they are trying to get into it. So let's see what are the key differences and what is really making the people get into it and try to use it. We'll go step by step. My presentation will be covering all these things, and we will be covering like what is ChatGPT, how it started, were the alternatives before DeepSeek, what made DeepSeek so special, and how the AI market, especially in US, they reacted to uh, to the DeepSeek launch, and then if we try to compare the DeepSeek with the ChatGPT, how it reacts. We're going to be doing a live demonstration as well with that, and we will try to compare the capability of both ChatGPT and the DeepSeek. Assalamu alaikum, Amer bhai. How are you? I hope you are doing good. Thank you for joining. Uh, and we'll be covering so by the DeepSeek slide bit. We'll try to compare that with the ChatGPT, what is its strength and limitation, and then of course we're going to go down to a live demonstration, and we will be having two screens side by side, and we'll be seeing the result of both. DeepSeek is just new in the market. Well, it was not. It's not that new, I would say. It was started long time back, but again, with the new algorithm that they have added to it, a new model you can say that was added to it, that has made it a bit more. You can say competitive with the ChatGPT. It's free for the time being. The link for that is in my description. I will request all of you to go and try it and see and try to use it. It's free. It's actually basically this is made by made in I can say by the Chinese engineers, and it's available online and it's really free. But the interesting thing is that as if you see just I think 2 days back or something, the US market has really reacted to this deeply because they started seeing this as a danger for their AI. So there are a lot of claims and this, but I'm not going to that topic, conservation topics. I just want to stick to the main topic of how we can, as as a normal person, as a layman, or I can say as a professional, how I can utilize this for my own benefit, how I can be let me see, Amirbai. Actually, I was not in chat and just see if I can. Can you hear me now? Can you hear me? To let me know because I'm trying to use a headphone. Let me see. Do let me know if you can hear me, or I'll just increase my little bit of my voice so that you will be able to hear me clearly. Uh, gonna be okay. So. So now we're going to go and do in the last, we're going to be going and doing a live demonstration and compare both the models, DeepSeek and the ChatGPT. It doesn't matter whether you are a professional or you have never used any of those softwares like ChatGPT or Copilot or what do you call Claudia or Gemini AI
or various others. You cannot use it. You don't have to worry about it. Even if you are beginner, you just don't need to worry about it. It's just or just curious about the new technology. You really don't have to worry about it, because in this session, uh, I will be I will be going through that in detail, and then we'll move forward. All right. Right. So please excuse me. Today, I guess I'm having a two screen in front of me, so I might not be able to see the chat. So please, right in the beginning, excuse me for that. I will be popping up it up and trying to see the chat in thing, because I want you all to be interactive. Please. Ask questions. This will keep me more engaged. This will give me energy to speak out, to give you the the maximum the knowledge out of this. Please feel free to ask a question. वेलकम प्रिया सिस्टर, वेलकम है आपका इस लाइव में। आज जो है एक नया सॉफ्टवेयर है जो कह सकते हैं कि चैट जीटीपी का अल्टरनेटिव है, डीप सीक, जो चाइनीज मेड है। और आज जो है ये लॉन्च हुआ है पब्लिक इसमें अराउंड आई कैन से एक वीक बैक। और उसने जो है काफ़ी लोगों का जो है इम्प्रेस किया है। तो मैंने कहा क्यों नहीं अपने लाइव में मैं इसको भी थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूं, ताकि जो है हम भी इसका लाभ उठा सके, हम भी इसका फ़ायदा उठा सके। और ये अभी फ्री है, तो हर कोई यूज़ कर सकता है। गूगल अकाउंट से आप जिस तरह ये यूट्यूब को लॉगिन करते हैं, उसी तरीके से आप इसको भी लॉगिन कर सकते हैं। और जो है ना, आप सेम प्रॉम्प्ट डालना है, सेम सेंटेंसेस डालना है। आई होप कि आप लोग ने पहले प्रॉम्प्ट ट्राई किए होंगे, चैट जीटीपी में एग्जैक्टली सेम है। लेकिन आपको जो है, क्योंकि नया है तो अभी लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी तक इसका आउटपुट आया नहीं है। चैट जीटीपी जो है बहुत पुराना मार्केट में है, तो लोगों ने उससे काफ़ी उसका जो है उससे फ़ायदा उठाया है। लेकिन जो है अभी डीप सीक जो है ये अभी नया है मार्केट में। लेकिन जो इसकी एक मिनट मेरे भाई, लेट मी सी, कैन यू हियर मी प्रिया सिस्टर? आपको आवाज़ सही आ रही है? मैं थोड़ा, वरना यहाँ से इसकी सेटिंग तो फुल बता रहा है कि हेलो। अच्छा, मैं सेटिंग में तो सब सही बता रहा है। हो सकता है कि वो हेडफोन भी जो है वो एकदम करीब में रखा हूँ मैंने। और ठीक है, तो तो ये चीज़ जो है हम इसका यूज़ करेंगे, और देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिट हो। हमें ये देखना है कि ये मॉडल किस तरह से हमारे बेनिफिशियल हो सकता है जब तक फ्री है इसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि चैट जीटीपी के जो नए नए मॉडल्स होते हैं उसमें आपको पैसे देने होते हैं, और जो डीप डीप सीक जो है वो जो है फ्री है। तो चले चलते हैं, लेट्स प्रोसीड एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी जंप टू DeepSeek, let's understand the foundation of AI chat models. Okay, so what is a chat model? A chat, like if you see a chat GTP, is an advanced AI language model developed by OpenAI that uses deep learning to generate human-like response. So yeah, I have already discussed that in my earlier lives and through the videos, that the chat GTP was developed by OpenAI, and it uses a deep learning to generate human like response। ठीक है ना? तो चैट जीटीपी जो है एक एडवांस एआई लैंग्वेज है, और मॉडल, लाइव मॉडल कह सकते हैं, लैंग्वेज मॉडल कह सकते हैं, जिसको ओपन एआई ने बनाया था। और वो जो है हमारी डीप लर्निंग को जनरेट करता है ह्यूमन रिस्पॉन्स के लिए। मतलब ये है कि जो भी आप उसको क्वेश्चन पूछते हैं या जो भी आप उसमें प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो उसके हिसाब से आपका ह्यूमन लाइक जो इंसान के जो एक रिस्पॉन्स होता है, जैसे हम आपस में बात करते हैं, जो रिस्पॉन्स आता है, तो उस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स देता है। तो बेसिकली चैट जीटीपी इज नथिंग बट एन एडवांस मॉडल। ठीक है, इट्स ए मॉडल, एंड इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन नवंबर 2022। तो चैट जीटीपी जो है वो नवंबर 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर इट्स एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस, generate content, assist with coding, summarize text, and create professional learning experience। ठीक है,
और ये नवंबर 2022 में जो है इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था पब्लिक के लिए। और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया था क्योंकि ये जो है अपने क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आप इससे पूछे, किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन आप उसको पूछो, ये इसका आपको जवाब दे देता था। और बहुत ही रिलायबल एंड जो है जो कंटेंट होते थे ये इसकी एग्जैक्ट एक्यूरेट होते थे। तो लोगों को पसंद आना शुरू हुआ। फिर लोगों ने जो है इसको कंटेंट जनरेशन के लिए बनाना शुरू कर दिया कि अगर हमें कोई वीडियो बनानी है या हमें जो है ईमेल लिखना है या प्रेजेंटेशन करनी है, जैसे मैंने लास्ट लाइव में बताया था कि पावर पॉइंट के अंदर हमने इसका यूज करके हमने जो है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाई थी। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट जनरेट कर रहा था। फिर असिस्ट विद कोडिंग, जो प्रोग्रामर्स थे उनके लिए जो था ये बहुत ही यूजफुल था, क्योंकि जो प्रोग्रामर्स होते थे उनको जो है काफ़ी टाइम लगता था कोड लिखने में। अब विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी जो है वो कोडिंग हो जाती थी। और जो है जो टेक्स्ट समराइजेशन है, जैसे मैंने आपको पिछले लाइफ में बताया था कि आप जो है पीडीएफ को अटैच कर दे, आपको जो है पीडीएफ की पूरी बुक की समरी आपको लिख के बता देता था। तो इट वाज वेरी 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 यूजफुल एंड वेरी यूजर फ्रेंडली था। So why it became so popular? Because it was answering all the questions, and most of the answers there that it was giving or presenting you back to, it was all reliable, and they were, I can say, most of the time, I mean, you can say it was all accurate. I mean, I'll not say most of the time, but because I keep using it for almost now it's 1 year or more, where I came to know about this platform. And believe me, now it is my daily, I can say, the part of my life, and I can't move without getting into a chat GPT. Even if I have to write an email, or I do have to make a presentation, or I do have to make, anything that I would like to make, even a video that I make, I go to chat GPT and take it. And believe me or not, I started calling it chat GPT uncle because it was helping me a lot. All right. So, and that was the thing, because whatever question I asked, it was giving. Initially, it was a bit difficult for me because I did not know the prompt, and I used to fight with him that you are stupid, and it was very nicely saying all this, answering me, I'm sorry for the inconvenience and so. But then slowly and on, and I started getting into the prompt engineering, and I started getting into how to write a prompt to get a proper answer. So the key thing that I was missing right in the beginning was prompt, because I was new to that. And by writing the prompt, it was generating a right content that I required. It was giving me a right answer. What I was requiring for that, it was searching my email. When I'm in my office, I use Copilot, which is of course using ChatGPT 4.0 model, and it's writing me, basically looking for me an email in the, I can say, like, I have, in a day I get like more than 100 or 200 emails, and it was really very difficult for me to manage those emails, especially after a week time when my boss used to ask me, can you please look for this email and answer that? So I used to go to Copilot, hey, can you look for me this email with so and so subject, and boom, the email was there on my screen. All right. So that made it more for the public to get into it. All right. And then came with the coding. I did not use the coding part, but I did to certain part. I used it in Python, and I created a game in Python using ChatGPT and so on. And there were so many things that were, it was there. So because of this user friendly and a fast response, it has been widely used across the industry. Sorry, like education, business, customer support. And now the interesting that I will be demonstrating, inshallah, by around, I can say, after 2 weeks or so before Ramadan, I will show you how you can make using AI. There is something called agent, and I'm going to use that agent to make customer service or customer support, where the system will answer your customer directly without you been working, without you been having a secretary who is trying to answer your question, who is trying to taking an appointment. All this thing is done by the AI now. You just don't have to do it with the use of chatbot. So I'm trying to work on it, and once inshallah is done, I will certainly demonstrate that in my life. So if someone is having a business, or someone is having, working in office, you can just recommend to your boss, and it's free of charge. I mean, all you need is a phone number. Just put in the phone number, and it will take an appointment. It will answer your customer, and it will be helpful. सो इतने सारे यूजर्स के बाद जो जो यूजर फ्रेंडली था, तो जो है वो काफ़ी लोगों ने उसको जो है एक्सेप्ट किया।
एजुकेशन में यूज हुआ, बिजनेस में यूज हुआ, कस्टमर सपोर्ट वालों ने यूज किया। और मैं अभी इस वक्त जो है एक चैटबॉट का स्टडी कर रहा हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ, जिसमें जो है आप अपना ऑटोमेटिक कस्टमर हेल्प सपोर्ट बना सकते हैं। जो आपके, अगर आपका बिजनेस है या आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप अपने बॉस को जो है ये भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे एआई जो है सारी चीजें आंसर करेगा। मतलब ये आपका अपॉइंटमेंट देगा, अगर आपकी कोई क्लासेस चल रही है तो ऑटोमेटिकली आप वो जो है कस्टमर को जो है सॉरी जो है अपॉइंटमेंट बुक कराएगा और ईमेल सेंड करेगा, एंड एवरीथिंग दैट विल बी डन जो है ऑटोमेटिकली होगा। आई एम वर्किंग ऑन दैट। इंशाल्लाह रमजान से पहले पहले जो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको लाइव में आप लोग को बताऊं, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मोस्टली मैं ये कहूंगा कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप इसे पैसे कमा सकते हैं। इट्स फ्री, एआई इज फ्री। आप इसके थ्रू जो है आराम से किसी किसी कंपनी को, जरूरी नहीं अपने बॉस को, यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम, किसी भी कंपनी को अप्रोच करें और इसके मेथड से आप उनको सेल करके आप जो है पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेथड है। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा रमजान से पहले पहले, या नहीं तो जो है रमजान के बाद इंशाल्लाह मैं जो है ये ऐप को आपके सामने लाऊंगा। बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। और ऑफ कोर्स मैं हाजिर हूँ, वेन एवर यू वांट यू कैन कांटेक्ट मी। मेरा फेसबुक आपके पास है, मेरे जो है आपका यूट्यूब चैनल आपके पास उसमें है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह till the end of after Ramadan, or maybe during the Ramadan, before Ramadan, I will be demonstrating that. So just give me some time, inshallah. ठीक है, तो बिफोर वी प्रोसीड पहले देखते हैं कि कौन कौन था। डीप सीक तो अभी आया है, डीप सीक से पहले कौन से जो जो अल्टरनेटिव्स थे एआई की, कौन से एआई थे। ठीक है, तो अगर आप ये देखें यहाँ पर जो है उसके पहले गूगल गूगल ब्राइट आया था, जो नाउ अभी जो है जेमिनाई हो गया है। ठीक है, इसको गूगल ने डेवलप किया था। फिर क्लाउडी आ गया था। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को पायलट आया था। फिर मिस्ट्रल एंड लामा आया था। ठीक है, लेकिन और जो चैट जीटीपी था। ठीक है, तो ये चार पांच जो है चैट जीटीपी के अल्टरनेटिव थे डीप सिक से आने से पहले। ठीक है, डीप सिक जो है ये सेम कॉपी ऑफ एआई है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है। इसके जो फीचर्स है वो एडवांस है, और ये जो है एडवांस फीचर पे काम करता है। मैं उसके अब मैं जो है आप लास्ट में मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी करूंगा आपके लिए, ताकि आप जो है इसको देख सकते हैं दोनों के डिफरेंस। एंड बिलीव मी और नॉट, मैं आपको फिर से सबको ये कहूंगा, स्टार्ट यूजिंग इट। डोंट वेट before it becomes a complication, before it is complicated, before the things were like, जब आप कहोगे मुझे चैट जीटीपी आता है, लोग कहेंगे अरे ये इतने साल के बाद आप सीख रहे हो, ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है। अभी इतनी नई टेक्नोलॉजी, इतनी नई नहीं कहूंगा, लेकिन ये कि यस अभी भी मार्केट में नहीं है। स्टार्ट करें, अपने वीडियोस के लिए स्टार्ट करें, अपने कंटेंट्स के लिए स्टार्ट करें, अपने किड्स को, अपने जो कजिन्स है, अपने जो फ्रेंड्स है, उनको आप जो है ये चीज का पता है, एंड ट्राई टू यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी। ये बहुत फास्ट डेवलप हो रही है, एंड बिलीव मी और नॉट, आप घर बैठे कमा सकती हैं। जो हमारी जो बहनें हैं, जो कुकिंग चैनल्स हैं, जिनका आर्ट्स का है, जो टूरिज्म के हमारे भाई हैं, या जो कंटेंट राइटर्स वाले हैं, ट्राई टू यूटिलाइज, ब्रिंग एआई टू योर लाइफ। आई बिलीव मी, it will save your time. So moving forward, what were the different alternatives that were there before DeepSeek? I mean, DeepSeek just came now, almost. I mean, it became public, known to the public like a week back. But you can see that there were some of those models that were run. The ChatGPT was one of the boss for everyone. When the ChatGPT came in, all these fours were not able to survive in the market. Yes, they were there, but the models that ChatGPT was using, no people started liking ChatGPT. So what were there? There were a Google Brag, which is now known as Gemini. It was developed by Google, and then it integrated deeply with search capability and Google service. So it was mostly into the Google. Claudia, then Microsoft Copilot. We have seen how to use Copilot. I've shown you in my last presentation as well. The second one was a Mistral and Emma. Okay, so again, all these things, they were all open source, and then of course the ChatGPT, when it came in the market, all these people started running to create it on the ChatGPT, and it was indeed a very breakthrough. What people were surprised. I mean, how it can answer a question. I mean, I asked one time a question about some some prophets, Islam prophets, and I even asked about some of their religions, and it was able to answer me. And then when I checked with them, because for Islam, okay, I know I can go and refer them, but for the
non-Islamic thing. I asked one of my friend, and he said, "Yeah, that's right." I mean, it was so amazing that time that I mean, people were amazed and people were crazy because we had not seen this technology. It was something really new and a breakthrough. Now, DeepSeek is coming up with more advanced one, and I'm going to go into the deep why the DeepSeek is really is going to be one of the breakthrough, or I can say it's going to be a big computer, a big time computer for ChatGPT, and that is what the ChatGPT and the market in US was. And I think if you see the news around 2 days back, they were all stumbling. They were all like, oh, DeepSeek everywhere on the news was about the DeepSeek. So moving forward is what is DeepSeek? Why? What is it? I mean, there are so many things. So what is it? Okay. So and everyone is talking about it. If you go on Google and if you go on any news channel, people are talking about DeepSeek, especially the US market. US are really the people. I think there was around 53 billions of something was the stake that was been, people's things were going on. So DeepSeek एग्जैक्टली है क्या, मतलब इतना क्यों जो है यूएस के मार्केट जो है घबरा तो नहीं गए मैं कहूंगा, लेकिन ये स्ट्रगल होना शुरू हो गया कि डीप सीक लॉन्च हो गया। ये कौन सी नई चीज थी, ये कौन सी नई चीज जो मार्केट में आ गई थी कि जो यूएस के बिजनेस ओनर थे दे स्टार्टेड रीथिंकिंग अबाउट द एआई मॉडल्स कि क्या ये चीज है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए एज अ लेमैन, और अगर हम देखें हमारे कॉमन नॉर्मल पर्सन के लिए, तो दोनों सेम है। लेकिन जो मॉडल डीपसीक यूज कर रहा है ये कंप्लीटली डिफरेंट है, और ये फोकस करता है टेक्निकल चीजों के ऊपर, और ये फोकस करता है डेटा एनालिस्ट के ऊपर। तो इट इज अ प्रोफेशनल। मैं आपको इसका जो है डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा, और ये क्या करता है ये भी मैं खुद डीपसीक से पूछूंगा कि तुम क्यों इतने अच्छे हो और तुम्हारी क्यों इतनी जो है वो चीजें हैं, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो डीपसीक जो है एक न्यू एआई लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, जो रिसेंटली मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये काफी दिन हो चुके हैं। आई थिंक 3-4 साल पहले इसको डेवलप किया गया था। लेकिन ये आपको पता है जब ये मॉडल डेवलप होता है तो इसको लर्न करते हैं, कहते हैं लर्निंग। ठीक है, ये वर्ड यूज होता है कि स्टिल द मॉडल इज लर्निंग। तो लर्निंग फेज में था। अब जो है उसने अपनी लर्निंग को जो है वो उसने डाल दिया है, जो है वो उसको यूटिलाइज कर चुका है, और जो है मार्केट में आ चुका है। तो बेसिकली वो जो है एआई मॉडल, इट वाज डेवलप्ड इन चाइना। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड इन चाइना, and it gained a massive attention because of impressive capability and the fact that it trained on extensive data set with a unique algorithm approach। ठीक है, तो ये चीज थी जो जिसकी वजह से ये मार्केट में, या आप कहते हैं कि वर्ल्ड में जो है इसने काफी लोगों को जो है इसके ऊपर अटेंशन डाइवर्ट किया है। ठीक है, और जो है लोग इसको चाहने लगे हैं। ठीक है, तो बेसिकली डीप सीक जो है इस न्यू मॉडल है। ठीक है, व्हाट मेक डीप सीक अ स्पेशल, स्ट्रॉन्ग इन लॉजिक बेस्ड रीजनिंग। ठीक है, एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स। ऑलराइट, राइट। Better performance is mathematic and structural problem solving। ठीक है, so it's not only about just chatting and content creation and so on, but whereas it is just give me a minute, sir, I'm having an issue with my screen। Okay, so stronger in logic-based reasoning as compared to the traditional AI model, better performance in mathematical and structured problem solving, multi-language capability. Okay, it can support you in multiple languages, advanced context understanding। मेरा size क्या है? इसका size क्या है? तो मेरा वो देख लो, चप्पल की साइज देख लो। हाँ, multi-language capability that rivals top AI model use, advanced context understanding, it reduces incorrect responses। तो ये सारी चीजें जो थी उसकी फीचर थी जो डीप सीक एआई की है। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्गर था लॉजिकल बेस में। अगर आप दूसरे एआई मॉडल से आप इसको अगर कंपेयर करते हो, तो इट वाज इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्गर लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, मैं थोड़े चैट देख लेता हूँ हमारे कि अगर कोई क्वेश्चंस है यहाँ पे।
जी उमेर भाई, माइक मेरा बहुत क्लोज है एक्चुअली। जो है मैंने इसको वायरलेस से निकाल के मैंने इसको वायर थ्रू कनेक्ट किया हूँ। हो सकता है कि आज थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा। I hope you are all enjoying. ओके, कीप चैटिंग, आस्क क्वेश्चंस, प्लीज क्वेश्चन पूछते रहें। मैं टाइमली जो है इसको देखता रहूँगा चैट बॉक्स में, क्योंकि मैं जो है दो स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ। एक तरफ जो है मैंने डीप सीक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि इतने हमने अभी नया है, इसको मैंने यूज़ करना शुरू किया हूँ, लेकिन डीप में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जो है डीप सीक को डीप में जाना चाह रहा हूँ। तो इस वक्त जो है एक स्क्रीन पे मेरे पास जो है वो स्क्रीन सेव कर रहा हूँ मैं, और दूसरे पे जो है मैंने उसकी थोड़ी लिटरेचर रखा हूँ, ताकि मैं आप तक इसको जो है डिटेल में पहुंचा सकूँ। बेटर परफॉर्मेंस जो है इसका मैथमेटिकल एंड स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग में है। तो जिनका जो है मैथमेटिकल मॉडल चाहिए होता है, तो वो इसके लिए जो है ये बेस्ट है। डीप सीक जो है वो बेस्ट है। मल्टी लैंग्वेज आपको चैट जीटीपी की तरह जो है वो मल्टी लैंग्वेज भी करता है। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यूएस मार्केट रिएक्शन टू द डीप सीक। तो मैंने जैसे बताया था कि 3-4 दिन पहले जब ये लॉन्च हुआ था, तो इट वाज लाइक अ शॉक वेव, इट वाज लाइक अ शॉक वेव, एवरीवन वाज लाइक रिएक्टिंग टू इट, एंड all the news channels and the whole headlines across the news channels, you can see a deep seek everywhere. Deep seek was like on the top and was very trending, and still is a trending topic, and people are still, the researchers and the developers and the programmers are still exploring deep seek to see what model it is using and how it can be useful for everyone, because it looks like it's a complete different change लाया है। तो जैसे मैंने बताया कि दो दो तीन दिन पहले अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, या अगर आप जो है किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर आप जाके देखते हैं, तो कुछ नहीं होता था, बस इट वाज ऑल अबाउट डीप सीक, सब जगह डीप सीक था। तो इट वाज रियली, स्पेशली यूएस में, इट वाज रियली a big shock wave for them. Okay, the US has been leading in AI, innovation, with OpenAI, Google, and Anthropic dominating the market. One of the reason why, because US, all the new technologies related to AI were out from were out from US. So as soon as they see something coming up, they had like, a big challenge. So when DeepSeek was introduced, many tech analysis started comparing its capability with the ChatGPT. So then what happened, that when this DeepSeek was launched और इंट्रोड्यूस, ओके, तो जो भी एनालिटिक्स होते थे, जो एनालाइज करते हैं सॉफ्टवेयर को, और जो जो है उसको यूज करना शुरू करते हैं, तो उन्होंने जो है इसको अपने चैट जीटीपी के जो जो कैपेबिलिटी है उसके साथ में कंपेयर करना शुरू कर दिया। और जब उसके साथ कंपेयर करना शुरू हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या है, अभी लोग रिसर्च कर रहे हैं, अभी लोग एनालाइज कर रहे हैं, और जो है बहुत ही लोगों ने जो है इसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ है। एंड अब देखते हैं उसका, मैं खुद जो है इस पे एनालाइज कर रहा हूँ, दोनों का कंपेयर कर रहा हूँ कि दोनों का जो है, क्योंकि नया है तो इट टेक्स सम टाइम, ठीक है। Concerned about AI competition between China and US. This is something that was a diplomatic thing that came as DeepSeek showcase high accuracy in technical problem solving and stronger multilingual support. ठीक है, तो जो ये चीज थी which was a technical problem solving, ठीक है, that has made a big shockwave or a big reaction from the US market. ठीक है, क्योंकि चैट जीटीपी का जो था वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं था, it was just content writing and image creation and video generation and so and so and so, etc etc etc. लेकिन with the DeepSeek, it was a technical problem solving. You can it, and it is meant for it. I'm going to showcase to his, and I asked this question to ChatGPT, sorry, to the DeepSeek. What do you think and what is your capability? मैंने खुद डीपसीक से सवाल किया है कि आप अपने आप को कंपेयर करें चैट जीपीटी के साथ, मुझे बताएं कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, और मैं आपको जो है उसका जो है मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा कि वो क्या उसका जवाब था, ठीक है। Some even believe DeepSeek to challenge ChatGPT. Yes, it will, because it's gonna be a competitor. It's gonna be a competition in the market. Now we'll have a very strong competition between ChatGPT, because so far ChatGPT was just, I can say, was just a single in the market. I mean, they had a monopoly. They were the best one. Now, with the introduction to the DeepSeek, it will be a competition. Let's see. Still, it's too early to come to this comment. I'm not the one who is going to be passing on my judgment or my comment on that.
but it seems that it's gonna be a competition between both of them. And I hope it will be good for the public, because people will have an option to choose between both the model, because initially that was only ChatGPT, and they were of course Gemini and Claudia, and but they were all having a different objective. But ChatGPT was most commonly used, and now with the DeepSeek, a normal public or normal people like us will be able to get an opportunity to try that and use it. तो यस, कंपटीशन हो सकता है और होगा, क्योंकि जिस हिसाब से डीप सीक का जो जो मॉडल है, जो टेक्निकल सॉल्विंग है, स्पेशली टेक्निकल पीपल जो है और जो है जो डेटा एनालिस्ट है, वो मैं करेंगे। मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ डेटा एनालिस्ट नेक्स्ट, उसमें अपने लाइव में भी पहले मैं खुद करूँगा पर्सनली, फिर लाइव में बताऊंगा कि इसको किस तरह हम जो डेटा एनालिस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं इसको नेक्स्ट लाइव में, ठीक है। अब इसको मैं कंपेयर कराता हूँ कि चैट जीटीपी से, ओके, ये किस तरीके से जो है आपका यूजफुल होता है, ठीक है। इसका जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, असल में अगर हम इसको एक प्रोग्रामर के तौर पे देखते हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, एक मिनट मैं देख लूँ अगर किसी का कमेंट है कुछ। I hope all joined है, you're enjoying. Please keep asking questions. आई नो मेहर भाई, थैंक यू, आप ऑफिस में हैं, आपने ज्वाइन किया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बट दिस टॉपिक इज रियली 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 वेरी वेरी गुड। हो सकता है मैं इसको फिर रिपीट करूं, मेरे लास्ट नाइट लाइव में भी इसको लगाऊंगा, हो सकता है मैं कल फिर से इसको करूं या परसों कल करूं मैं। और मैं चाहूँ इसको जो है पहले मैं इसको अपने लाइव को जो है वायरल उसमें लगा दूं, ताकि जो है पहले से इसका जो है मैं बना के रखूं, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वी शुड स्टार्ट यूजिंग इट। आई मीन अभी जो है हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, पहले की जो है इट बिकम्स टू कॉम्प्लिकेटेड। तो जो भी चीज़ नहीं होती है बहुत आसान होती है। सो एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स कंपेयर बिटवीन डीप सीक एंड चैट जीटीपी। ओके, डीप सीक जो है इफ यू नीड अ लॉजिकल रीजनिंग लाइक मैथ्स और स्ट्रक्चर्ड आंसर, डीप सीक इज अ पावरफुल चॉइस। ओके, मतलब ये है कि आपको कोई मैथमेटिकल रीजनिंग चाहिए या आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है, और आपको जो है कोई कोडिंग के अंदर उसमें डालना है, तो द डीप सीक इज द बेस्ट ऑफ दिम। ओके, चैट जीटीपी is good but less accurate in mathematical reasoning. Okay, तो अगर चैट जीटीपी आप यूज करते हैं तो if you want creative conversation and storytelling, चैट जीटीपी remains the best. तो अब ये देखिए दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, और इसी वजह से जो है डीप सीक जो है इट वाज मोस्ट was very preferable for the technical people, for the professional people who are in the technical side, जो आईटी वाले हो गए, प्रोग्रामर्स हो गए, क्योंकि ये मैथमेटिकल जो उसका वो था, जो मैथमेटिकल रीजनिंग थी उसी के ऊपर उसने यूज किया है। तो इट इज वॉज मोर फॉर द टेक्निकल प्रोफेशनल rather than a non-technical like a storytelling or creativity, image generation, video generation। तो इसके पर उसने जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था, और इसी वजह से वन ऑफ द रीजन आप देख सकते हैं कि व्हाई it has been so quick in the market within 3 days। it has gained I don't know how much amount, बिलियन डॉलर्स का जो है इनका इन्वेस्टमेंट जो है लोगों ने इन्वेस्ट किया इसके अंदर। तो उसका जो शेयर प्राइस थी वो जंप की है विद इन 2 days। आई विल बी शोकेसिंग दिस इन माय नेक्स्ट लाइव, इट विल बी ऑन संडे, कि उनका जो है ट्रेंड किस तरह जंप किया है, ठीक है। अब जो है इसकी और दूसरी चीज है लैंग्वेज सपोर्ट। ऑफ कोर्स इट हैज अ स्ट्रॉन्ग मल्टी लैंग्वेज कैपेबिलिटी। ओके, चैट जीटी में इट हैज द लैंग्वेज कैपेबिलिटी बट वेरीज इन द क्वालिटी। तो अगर आप इंग्लिश में कह रहे हो तो इंग्लिश जो है उसका बैकबोन है, इंग्लिश में आपको ये सही जवाब देगा। हिंदी में मैंने चेक किया हूँ, कभी कभी जो है थोड़ा घबरा जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे कर देता है, लेकिन देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, देता है, कैपेबिलिटी है। सॉरी, मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने 1 साल से उसको यूज करता रहा हूँ एंड इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी। लेकिन ये है कि थोड़े दूसरे लैंग्वेजेस में आप वो तो जो है वो नहीं सही तरीके से उसका जो मॉडल है उसको प्रोसेस कर पाता है, लेकिन ये है कि इट विल गिव यू द आंसर,
ठीक है। लेकिन with the deep sea it has a strong multi language capability. I will not say that a chat gtp does not have it. It has it, but not of that quality. I mean, I tried that in hindi and I tried that in urdu and other languages. When it's a general content, it's fine, it gives a very nice answer. But when you go a little bit in the calculation part, then you need to be a little bit more cautious of what you are using, which language you use. So for that, I mean, you cannot use Hindi or you cannot use the other languages for the communication. But again, I mean, it's very too early to go and judge which one is the best one still. I mean, that is a claim that DeepSeek is saying that I'm very strong in mathematical calculation, I'm very well complex in the logical, but we don't know still. We need to go and explore more and more into this. The more we explore, the more we'll come to know the pluses and the negatives and the pros and the cons. Okay, so you'll be only coming to know when you go into it, when you start using to it. Okay, when you start using the software. All right, so that's the one. The limitation is lack of creativity in free flowing conservation is less refined, and so on and so on and so on and so on. All right, for the creativity of content, as we clearly seen, it is good, but not as creative as ChatGPT. ChatGPT is best for that. I mean, if you want to write a, we have seen it. We were in our last live, we were creating a storybook, ebook. Okay, we created a complete ebook using a ChatGPT. All right, the content was completely written by ChatGPT, and I put that the link for that in my live description. I think it was last week, and all this thing I was generated, it was generated by ChatGPT. Okay, so it's very good to do that. तो आपने देखा था कि जो क्रिएटिविटी में जो है डीप सी कितना अच्छा नहीं है, बनाता है लेकिन इट्स नॉट दैट गुड, ठीक है। लेकिन चैट जीटीपी जो है वो स्टोरी टेलिंग में, या जैसे हमने लास्ट लाइव में देखा था कि जो हमने ई बुक बनाई थी, ठीक है, इट वॉज, आई मीन, वॉज सो नाइस, इट वॉज सो नाइस। आई मीन, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, अगर आप इसको सेल कर दो अपनी खुद की ई बुक बना के रेसिपीज की, और जो है अपने टेक्नोलॉजी की या टूरिज्म गाइड की या एक्स वाई जेड जो भी आप करते हैं, जो भी आपकी निश है उसके पर आप बना दो, यू कैन अर्न मनी फॉर दैट, ठीक है, फ्रॉम इट, सॉरी, नॉट फ्रॉम दैट। अब जो है हम जाएंगे थोड़ा सा इसके पर। ओके, पहले जो है मैं एक और चीज बता दूं कि व्हाट डीप सीक कैन डू एंड कैन नॉट डू। ओके, सो what can DeepSeek can do before we go to the live demonstration. Okay, let's see what DeepSeek can do and what DeepSeek cannot do. Okay, so DeepSeek can answer a complex logical and math-based queries. Okay, second, it is a provide multilingual support, generate structured content for report and formal writing, assist in programming with a clear coding logic, right? And what it cannot do, it lacks a creativity in free flowing conversation compared to chat gtp. It is less refined, in responding to open-ended philosophical or abstract discussion. Since it is new in market, it might have limited integration application. ठीक है, तो डीप सीक क्या कर सकता है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स लॉजिकल आंसर्स है उसको आंसर करेगा, और मैथ बेस्ड क्वेरीज है उसको आंसर करेगा, ठीक है, और प्रोवाइड मल्टीलैंग्वेज सपोर्ट करता है आपको, ठीक है, जनरेट स्ट्रक्चर कंटेंट फॉर रिपोर्ट एंड फॉर्मल राइटिंग, ठीक है, असिस्टेंट प्रोग्रामिंग विद क्लियर कोडिंग लैंग्वेज लॉजिक, सॉरी, ठीक है। और ये क्या नहीं कर सकता है कि इसको क्रिएटिविटी नहीं है, ये आपकी ई बुक बना नहीं सकता, आपके इमेजेस बना नहीं सकता, आपकी जो है सॉरी आपकी ई बुक्स नहीं लिख सकता, आपको वीडियोस के लिए वीडियोस नहीं, हाँ उसका कंटेंट बना के दे देगा, लेकिन ये कि वीडियो जनरेशन नहीं करेगा, इमेज जनरेशन नहीं करेगा। अभी जो है वो नया है, तो उसका वो मॉडल अभी इस वक्त फिलवक्त जो है उसको वो नहीं कर रहा है। लेट मी सी इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस। Thank you, Priya sister, for still joining. I hope others they are enjoying and they are watching without I'm sure you're busy in listening. All right, so let's move on. हम जो है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पे चलते हैं, जहाँ पे I will go and go through the interaction interface, respond different type of queries. हम कंपेयर करेंगे चैट जीटीपी से, ताकि हमें पता चले कि दोनों में जो है क्या डिफरेंसेस है, और जो है उसका जो है क्या क्या हम फंक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले चलते हैं हम, लेट्स गो टू द वेबसाइट। लेट मी ओपन अप द, ओके,
तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये दो वेबसाइट्स यहाँ पे खुली हुई है साइड बाय साइड, चैट जीटीपी और डीप सी। ठीक है, ये दोनों वेबसाइट है। और इस पे ऊपर जो है हम देखते हैं कि ये जो वेबसाइट की मैं बात कर रहा था, डीप सी, ठीक है। ये जो है अगेन इट्स अ फ्री। आप जो है मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ कि थैंक यू, ठीक है। इसको जो है मैंने आपको बता दिया हूँ कि इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप जो है यू कैन गो और आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं आप। अभी जो है चैट जीटीपी आज तक जो है हम को पायलट एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट को पायलट, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट Claudia, I was just talking about ChatGPT, but now from now on in my life, in my videos, I'll be also talking about DeepSeek, because every day I'll be exploring something new. I'll be learning something new, and then I will bringing it for you to learn and to get the new thing that that's there in the market. So this is the website deepseek.com. All right, you click on the start now, then it will take you to a login page, and from the login page you can you'll see this kind of a platform. Okay, so I asked the DeepSeek first before I go to the demonstration. I just want to show you what a small exercise I did yesterday. It's a bit slow, I will tell you very honestly, because it's new. A lot of people they are trying to get into this, trying to explore, trying to see what is it. So it's a bit slow, but just give it some time for it to stabilize. ChatGPT is much faster. Okay, so you can see here already I've said, okay, can you do that in Hindi and this. So, but before I go that, let me go up and I ask a question, and I'm using the same prompt that I was using. So I just wanted to ask them, okay, that hello, as an expert and more advanced, can you please detail me a difference between you and ChatGPT? I need a professional answer. I told this very straightforward to Mr. DeepSeek. Okay, so I asked them, okay, you are an expert and you are more advanced as you claim. Okay, give me a detailed difference between you and that. So it has given me a very good comparison. Okay, like what is this? That it says I am based on a proprietary architecture developed by DeepSeek, optimized for specific use cases and fine-tuned a diverse database. My training emphasizes accuracy, efficiency, and ability. Okay, that is just trying to show his model. What are the models? My design prioritizes precision and depth in response, particularly for technical, professional, and domain specific queries. Okay, so it is not based or it is not for a general creativity. So it has already told me, or it has just highlighted this in this prompt, that I am all for technical, professional, and for the domain specific queries. So, okay, I can provide you a concise, accurate, and actionable information. So if you're going to ask him something for the content, it's going to give you. But again, as I tell you that it's not going to be that. It will not be that professional answers. Okay, so don't expect that you will be getting a content creation, because it's not meant for that, right? So the DeepSeek is not meant for it. Okay, so that's the thing. So because it is focusing more on technical, professional, and domain. Okay, of course they are using various environments such as technical support, data analysis, research assistant, domain specific problem solving. I'm focusing on delivering reliable and structured output. Okay, so it is basically okay, so basically it is for the professional environment. It is not for a generic for any a general for a content generation, or for you can say for for the image creation. No, it is not meant for that. Okay, it is best for generating engaging and I can say a conversational and contextual rich responses. Okay, the next one is again it is talking just about technical. So let's try its technical capability rather than going to its something that is not, or the DeepSeek is not. Okay, so the reason for that I was focusing on that, because I just wanted to
wanted to see what is its capability so that I can experiment, I can go and research on it, I can go deep into this, right? So that was a very important thing that I wanted to see into this. So DeepSeek is high accuracy in technical, so it is very technical. Limitation is conversational, fair, and creative of ChatGPT. It is, we already know that it cannot create anything, content, or anything like that. So it is, we know that. So we're going to go more into the technical, like mathematical solution analysis and mathematical analyzation that we will be seeing it. Okay. Many may occasionally generate and less precise answer, customizing and integration. Okay. So then I ask this that without being biased, tell me which is the best. Okay, so of course it has been little bit on this side. They said yes, of course, both are the best. It depends on what are you going to be using it. So you see it's the same prompt. Okay, it is the same prompt, but you can see the different output. All right, so I wanted to see on that. The conclusion is that there is no definitive best AI. It depends on your specific need. Okay, choose Deeps for this, choose ChatGPT for this. So both of them, they have a different objective, both of them, they have a different purposes. All right, so yeah, so it is more of like of, I can say, for the technical thing. Okay, now and then I ask you, can you generate image? No, sorry, I cannot generate image. I don't have the capability because I am more into in the technical part. All right. Now, going down to this one, I asked which all language. It says Hindi, Spanish, French, German, Arabic, Portuguese, Russian, and so on, and many more. Okay. Going to the next question was a limitation in non-English language. While I can handle many languages, my proficiency may vary depending on the language and the complexity of the task. So yes, it is very fair and very very open. Okay, and it does do that right now. Before wasting any more time, let's go to our chat and see its faculty. It's exactly the same copy of ChatGPT. You can see here, same, no difference. All right, they both are same. Okay, same chat box, same menus. Okay, you can hide the menu. It's exactly the same thing. You can hide the menu. You can see the menu. Okay, so let's do one thing. Let me go to a new chat. Okay, again, it's very easy. Go to deepseek.com. Click on start over. Log in with your Google email. Okay, all right, go to your Google, use your Google email account, Google account, and then just log in and get an access to the DeepSeek. Okay, you can go into that. All right, then I'm gonna go to the new chat. Okay, so let me go to the new chat. Click a new chat. All right, and I'm gonna add the panel which is on the left. All right, let's go on. So now I'm gonna be minimizing my screen so that you can see it. I'm going to keep it side by side. Okay, I'll just bring it together here so that you can see the response, and I'm going to bring the chat GTP to its next one and see how it's going to be working. Okay, all right, so let's ask a question. Let's begin with asking question to Mr. DeepSeek. Okay, and then we're going to ask the same question to Mr. ChatGPT. All right, let's continue. All right, so let's see. Let's ask a very simple question. Who was the first person to walk on the moon? Okay, let's see. And let's put the same question here. And let's see the speed. And let's see. You see the speed. Of course, ChatGTP is in the market for a long, almost 2 3 years. Okay, so it has more faster servers. It has lot of subscribers. So it is much faster than this. So still it is working. And the reason for that is because now it's new in the market, so lots and lots of people are going into this to see how this can be useful for them because it's free, there is no subscription, so it is taking time. All right, let me see. I think the best time would be I'll do a recorded video during a daytime. It's much faster during the daytime. Okay, so you see this now.
Is it generating an answer? Okay, it is generating. It's taking time. The first person to walk on moon was this. Okay, so is same. We can see that the first person to walk on the moon was Neil Armstrong, an American astronaut and commander of the NASA, okay, Apollo mission. Uh, he stepped on to the lunar surface and famously declared that one step for a man, one giant. So it has, I mean, you can see it's almost the same. All right, it's giving the right answer, but this one was more. I can go to here. I can show you that this was short, brief, but it has given the a good I can say a good response. Okay, welcome Neelam sister to my life. uh, Sorry, I was not watching the chat. मैं chat नहीं watch कर पा रहा था क्योंकि मेरे screen sharing थी. uh, तो अब मैं जो है थोड़ी थोड़ी देर से मैं चैट देख रहा था. आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं मिस कर गया आपके चैट को. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सिस्टर, एंड आई होप यू ऑल आप भी अच्छे हो. आई एम फाइन. तो आज जो है हम एक न्यू मॉडल के बारे में कह रहे थे कि किस तरह जो है इसके यूज़ करके एआई टेक्नोलॉजी हम जो है कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं. तो ये था. तो मैं आज अभी कंपेयर कर रहा हूँ बिटवीन बोथ डीप सीक एंड द चैट जीटीपी. तो यहाँ पे जो है वो व्हाट आई डिड, मैंने जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन दोनों को पूछा क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ. डीप सीक जो है आज तकरीबन लास्ट वीक जो है ये पब्लिक हुआ है. मैं इंडिया से हूँ सिस्टर, फ्रॉम इंडिया मुंबई, लेकिन आई एम वर्किंग इन अबू धाबी एज एन इंजीनियर. लेकिन मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बट मुझे जो है एआई से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है. और काफ़ी मैं इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि ये जो है काफ़ी हेल्पफुल है. और मैंने काफ़ी अपनी सारी वीडियोस आप देखोगे जो है मैंने एआई से बनाया हूँ. तो आई लाइक इट. और मैं चाहता भी हूँ कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो देशवासी हैं, जो वासी है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो एआई का यूज़ करके जो है इसका इस्तेमाल करके जो है अपना टाइम बचाएं एंड प्रोफेशनल बना दें. क्योंकि इसकी जो कंटेंट जनरेशन कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ही फास्ट है और जो है ना एक्यूरेट होती है. तो हमें किसी और चीज़ का जो है कहीं और जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती कंटेंट की. तो एनीवे तो ये दोनों के आंसर थे कि मैंने उसको लिखा हुआ द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून. तो दोनों ने तकरीबन सेम दिया है, लेकिन इसने जो है थोड़ा थोड़ा डिटेल में दिया है, इसने ब्रीफ में दिया है, लेकिन दोनों का जो जो आंसर है तकरीबन सेम है. ठीक है, हम दूसरा अभी करते हैं. इसको करते हैं हम थोड़ा मैथमेटिकल, क्योंकि डीप सीक कहता है कि मैं जो हूँ टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग हूँ. मेरा मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बहुत बेहतरीन है. तो लेट्स सी इसका इसके दोनों का हम देखते हैं थोड़ा. ये कहते हैं इफ अ कार ट्रेवल्स. एक्चुअली मैंने ये प्रॉम्प्ट जो है रेडी करके रखा हुआ हूँ. ठीक है, दोनों के आंसर सेम आएंगे. ठीक है, लेकिन देखते हैं कि ये तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. आप इसका जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको और डीप में कर रहे होंगे. ठीक है, मैं एक बस अपने व्यूवर्स को जो है एक सिंपल सा मैं दे रहा हूँ. तो आप दोनों का डिफरेंस देखते हैं. ये थोड़ा स्लो है डीप सीक जो है, क्योंकि नया है, लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोग इसको जो है ट्राई कर रहे हैं. अभी जो है क्योंकि ये जस्ट एक वीक आया है एंड इट वाज लाइक अ शॉक वेव था मार्केट में. लोग क्रेज क्रेज हो गया था इसका, और एवरीवेयर न्यूज में सिर्फ जो है इट वाज ऑल अबाउट डीप सीक. ठीक है, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच आपको ज्वाइन करने के लिए, एंड आई होप कि आप इंजॉय कर रही हैं. तो ये अभी भी जो है कि आप देखें इसका जो प्रोसेसिंग है इट्स टेकिंग टाइम. वेयर चैट जीटीपी ने जो है इसका आंसर आपको दे दिया है कि द कार ट्रैवलिंग एट 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स. लेकिन ये बता रहा हूँ कि डिपेंड्स ऑन द टाइम, कि इस टाइम पे जो है यूएस के काफ़ी लोग वहाँ पे जो है अभी सुबह हो रही है तो काफ़ी लोग अवेक हो चुके हैं. तो अगर हम डे टाइम पे, यहाँ के इंडियन टाइम पे हम डे टाइम पे करें या जो है इवनिंग से पहले पहले करें तो आपको जो है इसका रिस्पॉन्स फास्टर होगा. इसकी एनालिसिस थोड़ी थोड़ी स्लो है, लेकिन ये है कि एंड ऑफ द डे मुझे ये देखना है कि आपको इसने जो है आपको सेम आंसर दिया है टू कैलकुलेट दिस, तो कोई फ़र्क नहीं है. ठीक है,
और ये सिंपल चीज़ है। तो इट्स रियली गुड। अब इसने यहाँ पे इमेजेस डाल दिए हैं जो इसने नहीं दिया है, क्योंकि टेक्निकल बातें करता है। द कार विल ट्रैवल, तो दोनों का जो है आंसर और जो सेम है, 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर है। दोनों ने आपको जो है कैलकुलेशन मेथड भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और आंसर सेम है। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि इसने इमेज थोड़ा आपको जनरेट करके दिया है और इसने इमेज नहीं दिया है। तो ये चीज़ें जो है, जो इसने क्लियरली कहा है कि मैं जो हूँ इसके ऊपर जो है मैं इमेज जनरेशन में मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं कि लैंग्वेज की कैपेबिलिटी थोड़ी सी इसकी चेक कर लेते हैं, ठीक है। और कंटेंट राइटिंग का चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि मैं कंटेंट राइटिंग में अच्छा नहीं हूँ। डीपसीक हमेशा इस चीज़ का एम्फेसाइज किया है कि आई एम वेरी गुड इन 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 दिस। और उसके बाद हम एक लास्ट लेंगे जो कोडिंग है, डिबगिंग है, जिसके ऊपर वो काफ़ी अपने आप की एडवर्टाइजमेंट करा है कि आई एम वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग, आई एम वेरी गुड इन टेक्निकल, आई एम वेरी गुड इन एनालिसिस। तो हम जो है ये वाली चीज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दोनों की जो है कंटेंट के ऊपर देते हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। लेट्स सी, दोनों को जनरेट करते हैं। इसमें चैट जीपीटी ने जो है सुपर फास्ट आंसर दे दिया है, लेकिन अगेन में जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये नया है, इसके सर्वर्स को थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, जैसे ये थोड़ा थोड़ा मार्केट में आना होगा, पब्लिक यूज करना शुरू होगी, यूजर ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, तो इसकी भी स्पीड जो है बढ़ेगी, क्योंकि इसका डीप थिंक का जो है ये डीप थिंक R1 यूज़ कर रहा है जो इसका मॉडल है, और चैट जीटीपी जो है चैट 4 वो यूज़ कर रहा है। तो ना आप ये देखें कि एवरी एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग दिस। तो इसने हमें आंसर दे दिया। आपको ये फास्टर है क्योंकि पुराना मार्केट में है, तो ये जो है फास्ट है। और ये जो है थोड़ा स्लो है, लेकिन ये कि हम एक और करेंगे, इसके बाद हम फिर जो है, अच्छा इसने अभी जनरेट करना शुरू कर दिया है। तो ये यहाँ पे पीछे आपको बैकग्राउंड भी दे रहा है, जो ये बैकग्राउंड नहीं देता। दोनों का फर्क ये देखें कि इसने हर उस पे जो है आपको जो है यहाँ पे ओके द यूजर आस्क्ड दिस फर्स्ट, आई शुड कवर द मेन दिस। तो ये बता रहा है कि ये इसने किस तरीके से थिंकिंग की है, जो चैट जीटीपी नहीं बताता कि वो थिंक क्या कर रहा है। डीप सीक जो है आपको सारे जो मैंने वहाँ पे दिया हूँ, वहाँ पे उसने अपनी थिंकिंग बताया कि मैं ये सारी थिंक कर रहा हूँ, और इसको जो है मैं कैलकुलेट करके आपके सामने दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज इज एसेंशियल, ठीक है। दोनों की बात सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, वेदर थ्रू दिस योगा। तो अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट दोनों की जो रिप्लाई है वो सेम है, ठीक है। जो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं कोई अभी उसको नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा फर्क है। ऑफ कोर्स जो है वो तो रहेगा, क्योंकि जो एआई जो है ये कभी आपका कंटेंट सेम नहीं होता, और इसी वजह से जो है आपका एआई के जो जनरेटेड है उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आते। आप उसको रिफ्रेश भी कर सकती हैं। आपको अगर कोई कंटेंट पसंद आया है, किसी का आर्टिकल पसंद आया है, आप इसको रिफ्रेश कर दें, आपका खुद का जो है कंटेंट और आपका जो खुद का जो है एक कंटेंट रेडी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको जो है अपनी वीडियोस के ऊपर किसी की रेसिपीज है आपको पसंद आई है, तो आप उसको आप जो है रिफ्रेश कर दें, आपको जो है वो सारा कंटेंट एक आपका खुद का बना हुआ मिलेगा। ये जो है ये जो है एआई की फैसिलिटी है, मतलब ये अच्छा फीचर है। गोइंग टू द लास्ट वन, ठीक है। राइट अ सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड लेट्स सी दोनों का रिस्पॉन्स क्या होता है। ये सिंपल है, मैं अभी अगले लाइफ में जो है थोड़ा डिफिकल्ट चेक करूंगा। मैं उसके लिए पहले जो है मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा, ताकि मैं इसके ऊपर जो है कॉम्पिटेंट हो जाऊं। ये अभी बस जैसे मैं कह रहा हूँ लास्ट वीक, ऑलमोस्ट अ वीक पहले लॉन्च हुआ है, तो अभी तक मैंने इसकी फुल कैपेबिलिटी चेक नहीं की है। लेकिन ये कि मैंने चाहा कि मैं इसको आपके सामने लेके आ जाऊं, लेकिन जो है नेक्स्ट उसमें जो है मैं इसको वो करूंगा, आपके सामने दोनों की जो है टफ, जो जिसको कहते हैं कि जिसको टफ यूज कहते हैं, वो मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों के सामने लिख दिया टाइप सिंपल पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये जो है मुझे इसका आंसर बता रहा है। लेट्स सी। तो अब ये देखिए, ये जो पाइथन है ये जो है डेटा एनालिस्ट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें आपको अगर प्रोग्रामिंग आती है तो इसने आपको पूरा प्रोग्राम लिख के दे दिया है चैट जीटीपी ने। अब देखते हैं कि ये इसमें जो है कर रहा है, सर्वर इज बिजी, ओके। तो ऑफ कोर्स इसका यही है, क्योंकि काफ़ी लोग, मैं जैसे पहले भी बताया कि इसके अंदर काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसका सर्वर थोड़ा बिजी होता है, ओके। अभी फास्ट था,
ठीक है, अब इसने जो है स्पीड जो पहले थी उससे काफ़ी कर दी है, तो इसका लोड कम हुआ होगा। तो अब ये जो है हम यहाँ पे पीछे एनालिसिस करके बता रहा है, ठीक है। अब ये दोनों के इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी आपको दिया है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों का ऑलमोस्ट रिजल्ट सेम है। नम वन फ्लोट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, num 2 input the second, sum result num 1 plus num 2। बेसिकली ये कर रहा है कि यूजर से पूछ रहा है कि मुझे पहला नंबर डालो, सेकंड नंबर, दोनों ऐड करो, और प्रिंट एफ। तो दोनों के अगर आप देखें तो अभी तक, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो उसने दिया है, अगर आप दैट इज नॉट देयर इन चैट जीटीपी। अगर ये मैं खुद देखो तो उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ दे रहा है द प्रोग्राम प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर टू नंबर्स। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या क्या चीज उसने इसके, इट एड्स द टू नंबर एंड स्टोर द रिजल्ट इन सम वेरिएबल। अब ये देखिए यहाँ पे इसने इतना क्लियरली नहीं किया, दिस प्रोग्राम टेक्स्ट टू नंबर इनपुट ऐड टैम एंड प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। इसने शॉर्ट बट स्वीट में बता के खत्म कर दिया स्टोरी। लेकिन यहाँ पे ये प्रोग्रामर को बता रहा है कि ये जो नम वन क्या है, नम टू क्या है, सम क्या है। हाँ, चैट जीटीपी करेगा अगर मैं उसको सवाल पूछूंगा तो, अगर वो नहीं करता है तो नहीं बताता है, ठीक है। जो आपको है बस वही है, जो आपने पूछा मैं उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन डीप सीक में ये डिफरेंस है, देखें कि द प्रोग्राम प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर टू नंबर्स। अब कौन सा है, नम वन एंड नम टू, कन्वर्ट टू फ्लोट टू द डेसिमल फॉर्मेट। अब एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने उसको कन्वर्ट किया एक डेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है। जिनको पाइथन आती है और वो जो है समझेंगे, मैंने पाइथन किया हुआ हूँ तो थोड़ा इसका मुझे मजा आ रहा है देखने में। इट एड्स द टू नंबर एंड स्टोर द रिजल्ट इन सम वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो दोनों को ऐड करके सम में उसको जो है स्टोर कर रहा है, और फाइनली जो है उसको प्रिंट कर रहा है। प्रिंट मतलब स्क्रीन पे ला रहा है दोनों का आंसर, नम वन का और नम टू का, ठीक है। तो ये देखिए इसने इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो आपको चैट जीटीपी में ने नहीं किया। तो ये एक डिफरेंस हमें नजर आया कि इसकी जो एक्सप्लेनिंग कैपेबिलिटी है, इट इज नंबर वन। मतलब ये कि अगर मैं नया प्रोग्रामर हूँ और इस तरह मैं जाऊँ तो ये नंबर वन क्या होता है, ये जरूरी है, मैं कुछ और नेम दे सकता हूँ। तो उसने यहाँ पे बता दिया कि नम वन क्या है और नम टू क्या है, राइट, ठीक है। ये जो है उसने एक्सप्लेन किया है, सम के बारे में बताया है, और साथ में उसने जो है फर्स्ट नंबर 5.5, सेकंड नंबर 3.2, तो उसने रन करके आपको आउटपुट भी दिया है, जो चैट जीटीपी ने नहीं दिया है। तो ये जो है एक मेजर डिफरेंस है उसका, ठीक है। और एक और इसकी जो कैपेबिलिटी है, स्टोरी टेलिंग का नहीं दूंगा, इसकी मैं जो है एक और स्ट्रॉन्ग चीज जो है इसके अंदर वेरी गुड है, उसका हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं कि राइट, इसको हम देखते हैं कि किसी लैंग्वेज में करते हैं। और राइट, सो लेट्स चेक दी कंपैरिजन। ओके, ट्रांसलेट। ओके, अब हम इसको जो है एक डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम इसको कंपेयर कराते हैं। आपको उस लैंग्वेज में जो है चैट जीटीपी भी बहुत अच्छा है। हेलो, हाउ आर यू, इन हिंदी, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश एंड चाइनीज, ठीक है। अब ये चीज मैं चैट जीटीपी कहूंगा, दोनों में फर्क नहीं आएगा। असल फर्क जो आता है वो आपका जो है, मेन जो आता है फर्क आपका, वो मैथमेटिकल कन्वर्जेंस में आता है। जैसे उसने, आपने यहाँ पे देख लिया कि उसने इतने बेहतरीन तरीके से हमें जो है बताया कि नम वन क्या है, नम टू क्या है, दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिलता है, ठीक है, वो चीज़ उसने बता दिया है। और यहाँ पे उसने जो है कैलकुलेट किया है, इसने बता दिया है कि नमस्ते, आप कैसे कैसे हैं, ठीक है। उर्दू में जो है हेलो, आप कैसे हैं। अब ये देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा होता है। स्पेनिश में बंजूर, कमेंट, आई डोंट नो, स्पेनिश होला, ठीक है। चाइनीज में पता नहीं, हम पढ़ नहीं सकते तो लेकिन ये है कि अब देखते हैं ये किस तरह जनरेट करता है। लेट्स सी, और ये लास्ट रहेगा, और उसके बाद जो है हम फिर आई विल एंड द लाइव। और नेक्स्ट लाइव में मैं थोड़ा और डिटेल में, जब मैं ये 2 दिन में मैं इसके ऊपर और एक्सप्लोर करूँगा, और फिर जो है इसके ऊपर हम देखेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें, जो और चीज़ इसकी जो चीज़ें हैं, ये क्या क्या करता है, ठीक है। चलिए, तो लेट्स सी, अभी भी ये जनरेट कर रहा है, इसका सर्वर लोडिंग थोड़ी ज़्यादा है,
और इसकी वजह से जो है ये स्लो है, लेकिन नो प्रॉब्लम, ट्राई करते हैं। ट्राई करने की चीज़ है, फ्री है, पैसे नहीं जा रहे हैं, लेट्स ट्राई। ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी इसके बाद मैं जो है इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ढूंढ के रखूंगा, क्योंकि सिंपल सिंपल तो दोनों दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसको डालूं, ताकि हम जो है इसको चेक कर सकते हैं। मैं चेक करूंगा कि ये दोनों को स्प्लिट कैसे करते हैं, स्क्रीन को साथ साइड बाय साइड आते हैं। अच्छा, ये अब जो है थोड़ा स्लो हो गया है, ये नहीं दे रहा है, लेकिन मैं ये लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन मुझे ट्राई करना ही है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ और फिर उसके बाद हम देखते हैं ये किस तरीके से में रिस्पॉन्स देता है। जो भी जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत दिल से मैं आपको थैंक यू करता हूँ कि आपने जो है मेरे साथ एक न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए मेरी मदद की। एंड आई विल ट्राई टू इसको और एक्सप्लोर करूँगा, और मैं इसकी हर वो जो हमारे लिए जो फ़ायदेमंद हैं, द वन दैट इज़ हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, मैं उसको आपके सामने लाऊंगा। और मैं इसको बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से और यूज़ कर सकते हैं, इसका किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं। और लेट्स सी कि ट्रांसलेट अगर करता है तो ठीक है, नहीं तो हम जो है नेक्स्ट लाइव में या मेरे वीडियो में मैं जो है इसका आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूंगा। अभी इस वक्त थोड़ा ये सर्वर बिजी है, तो लेट्स सी, थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। इसमें अभी क्योंकि नया है तो प्लीज इसको थोड़ा हम टाइम भी देंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि नया है, बच्चा है अभी मार्केट में, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ये लास्ट लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इसने कर लिया तो बहुत बेहतरीन होगा। जैसे कि इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास, लेकिन ये कि अब जाहिर सी बात है, एज इट विल बी लर्निंग मोड पे है। जब ये और थोड़ा पुराना हो जाएगा मार्केट में, तो आई एम श्योर कि ये जो है ये इसको और जो है डीप में आएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी इसकी स्पीड भी स्लो है, लेकिन लेट्स सी ये क्या देता है। अगर दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम जो है अपने लाइफ को इसके बाद एंड कर देंगे। आई एम रियली वेरी वेरी मच जो है मैं आप लोगों को थैंकफुल हूँ मैं आपके, आप मेरे साथ जुड़े रहे। और सर्वर इज बिजी, ठीक है, यही इसका प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, फ्री है, क्यों नहीं हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रियली थैंक यू, आई होप कि आपने आज जो है इसको कुछ नई चीज़ सीखी होगी। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं नई चीज़ खुद सीखूं, और सीखने के बाद जो है आप तक मैं इसको पहुंचाऊं। और और मेरे लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगा कि आप जो है इसको यूज़ करें। आई विल बी वेरी हैप्पी, आप मुझे बताएं नेक्स्ट कमेंट में कि आपने इसको ट्राई किया नहीं किया। तो आप ट्राई करोगे और आप जो है हमें मुझे बताओगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि जो टाइम मैं वेस्ट जो स्पेंड करता हूँ चीज़ों के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जिनके जो व्यूअर्स हैं, मेरे जनरल व्यूअर्स भी जो आते हैं और जो हमारे फ्रेंड्स हैं, इसको यूज़ करें और इसका जो है मुझे इसका फीडबैक दें कि हम जो है जो है हम यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मेरा जो असल अर्निंग जो होगी आप लोगों की लर्निंग से होगी। आप लोग जब सीखोगे, आप लोग यूज़ करोगे, तो आई बी मोर देन कहेंगे, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि आपने इसको ट्राई किया। तो आप ये देखेंगे इसने यहाँ पे जो है आपको इंग्लिश में भी दे दिया, ठीक है, नमस्ते आप कैसे हैं, और यहाँ पे उर्दू में भी दे दिया, हेलो आप कैसे हैं। मोर ट्रेडिशनल ग्रीटिंग उर्दू वुड से अस्सलाम वालेकुम आप कैसे हैं, बॉन्जूर। और यहाँ पे इंग्लिश में, तो ये दोनों को जो है इसने, आप ये देखें कि इसको इसने कंपेयर किया है, और यहाँ पे जो बड़ी चीज़ है कि वो क्या क्या सोच रहा है, ये भी आपको डिस्प्ले करता है। तो ये मेजर फ़र्क है दोनों के बीच में।
बिटवीन, मैं ये कहूँगा कि बिटवीन चैट जीटीपी एंड बिटवीन डीप सीक। ओके, तो हमने आज जो है इसको हमने जानने की कोशिश की थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर हमने इसको एक्सप्लोर किया दोनों सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है, और हमने देखने की कोशिश की कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो आपने भी देख लिया है। आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे थे, और आप जो है इसको यूज़ करेंगे अपने डेली लाइफ में। आई बी वहाँ पे जो है आई बी मोर देन हैप्पी। अगर आपको कुछ कमेंट्स हैं, यू हैव एनी कमेंट, प्लीज़ फील फ्री, आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं। आप मुझे जो है फेसबुक पे मेरा है, और यहाँ पे जो पोस्ट है उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। तो टिल देन, नेक्स्ट जो लाइव होगी संडे होगी। संडे में मैं थोड़ा इसके अंदर और डीप में जाऊंगा। इससे जो है हम किस तरीके से वी कैन अर्न, हम किस तरह जो है अपना जो कीमती वक्त है, हम किस तरीके से हम जो है घर बैठे जो है अपना एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, और जो है इससे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो until then, really thank you very much for joining my live, and I hope you have all enjoyed, and I hope you have learned. I will again request all my viewers to please try this in your free time. Try to start utilizing the AI technology. It's gonna be very useful for you. Okay, it will save a lot of your time. It will make your life easy. So once again, thank you very much for joining, and see you in the next live, which will be on Sunday, same time, 7 o'clock UAE time, 8 o'clock Pakistani time, and 8:30 Indian time. See you then. Take care. Have a nice weekend. Enjoy, and keep exploring the new technology. Thank you.